Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English grade 9 and welcome to the Chase Academy. I'm your instructor Zia Hamid. Students, I hope that you're doing well. In yesterday's lecture, in the previous one, we talked about modal verbs. And we will do the second part of modal verbs after this lecture. Let us cover this SLO of vocabulary, that is about using the dictionary or other resource materials to find specific information. So this is the SLO which is targeting the competency of vocabulary, your knowledge of words, कि आप ज़्यादा words इंग्लिश के सीखें with the correct meaning. अगर उसके अंदर different meanings हैं, nuances हैं, यानी slight differences हैं, तो आप उसको और उससे related word से related जितनी भी information है, जैसे कि उसकी pronunciation और एक word को आपने किस तरह सही से प्रोनाउंस करना है, किस तरह उसके डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट मीनिंग्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए. और इसके अलावा यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड लाइक how do you use the word in different sentences and so on. So this SLO specifically it wants you to be independent in learning the new words, in increasing your vocabulary. ये SLO demand करता है कि आप अपने जो अल्फाज के जो ज़ख़ीरा है, जो इंग्लिश वोकैबुलरी है, आप उसको इंक्रीज करें और ऑटोमेटिकली बाय योरसेल्फ इंडिपेंडेंटली आप रिसोर्सेज को, डिक्शनरीज, थिसॉरसेस को यूज करके नए वर्ड सीखें और आप उसको अप्लाई करें ताकि आपकी वोकैबुलरी अल्टीमेटली एनहांस हो जाए. सो सबसे पहले लेट अस रीड द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम ओवर हियर. इट सेज कंसल्ट जनरल एंड स्पेशलाइज्ड रेफरेंस मटेरियल्स, कि हमने कंसल्ट करना है. इसके लिए हमारे पास डिक्शनरी, थेसॉरस लाजमी अवेलेबल होना चाहिए. अगर आपके पास प्रिंट में है तो दैट इज वेरी गुड, नहीं तो आप ऑनलाइन या नॉन प्रिंट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं. तो हमने कंसल्ट करना है जनरल एंड स्पेशलाइज्ड रेफरेंस मटेरियल्स. कुछ रेफरेंस मटेरियल्स वो जनरल हैं एंड कुछ स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे थेसॉरस जो कि अल्फाज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स और उसके ऑपोजिट वर्ड्स बताने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है. सो वी हैव मटेरियल्स लाइक डिक्शनरीज, ग्लॉसरीज एंड थेसॉरसेस. क्या डिफरेंस है ग्लॉसरी में? डिक्शनरी में आपके अल्फाज और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली लाइक अ कंप्लीट पैकेज आपको मिलेंगे, बट ग्लॉसरीज आर कंटेनिंग टर्मिनोलॉजीज. जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो ऐसे अल्फाज हैं, वो आपको ग्लॉसरी में मिलेंगे एट द एंड ऑफ every chapter, or you can find glossary of different fields. तो इसी तरह glossary of terminologies, short forms, abbreviations, technical terms, तो वो आपको glossary में मिलेंगी. और उसके बाद है thesauruses. This is the plural of thesaurus, which means such kind of book जिसके अंदर आपको synonyms यानी similar words और बहुत सारे similar words जो आप डिफरेंट नुआंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, और इसी तरह एंटोनिम्स, तो ऑपोजिट वर्ड्स, यानी एक वर्ड है और उसकी ऑपोजिट कितने सारे अल्फाज हैं जो आप उसके खिलाफ, उस सिचुएशन के खिलाफ या नेगेशन में यूज कर सकते हैं. बोथ प्रिंट एंड डिजिटल, यानी प्रिंट फॉर्म में भी, जैसे कि आपके पास प्रिंट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में किताब है या कोई उसके कुछ नोट्स हैं, सफ़े हैं, और डिजिटल यानी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं या आप स्क्रीन पे डिजिटली आप उसको यूज कर सकते हैं, वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और डिजिटली आप इन रिसोर्स मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं. हम फाइंड आउट करते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी कौन सा जो अल्फाज हैं उनको किस तरह सही प्रोनाउंस करना है, व्हाट इज द राइट स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ वर्ड करेक्टली, and then clarify its meaning. Since words have so many meanings, so we clarify that what is the right meaning, and also part of speech and etymology. कि ये word जो है ये part of speech में किस category के लिए belong करता है,
Is it a noun? Is it a pronoun? Is it an adjective, adverb, preposition, conjunction, and so on? Or one more important thing is the etymology. यानी ये लफ्ज कहां से आया? हमें पता है that English language evolve हुई है with the passage of time. पहले कुछ और थी, उसके बाद वर्ड्स चेंज हुए, अब मॉडर्न हो गए. तो किस तरह एक लफ्ज कहां से आया ये हम देखेंगे एटमोलॉजी में, और आप एटमोलॉजी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द डिक्शनरी. हियर इज योर वर्टिकल लिंकेज ऑफ your grade 8 where it says use dictionary or thesaurus to locate guide words, locate entry word, look for the etymology of the word. So for the 8th grader these were the things, these are the demands of the SLO कि आप जो डिक्शनरी के ऊपर जो गाइड वर्ड्स होते हैं एट द टॉप ऑफ द पेज लेफ्ट एंड राइट टॉप, आप उनके जरिए अल्फाज को क्विकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसीलिए इसी तरह एंट्री वर्ड यानी जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद एटमोलॉजी यानी लफ्ज का ओरिजिन. सो फॉर 9th grade we know that we need to understand it much better and with more information. So let us brainstorm. Where do we find dictionaries? We can find it in the bookstores, we can get one from the library, and we must have a dictionary with us. We can have a pocket dictionary, or we must have one dictionary in our bag. So I would like to ask students from the Zoom class on the Renaissance, do you own a dictionary? Gee, am I audible? Let's see, let's unmute them. Yes sir, आवाज आ रही है. All right. डिक्शनरीज की काफी टाइप्स है, डिजिटल डिक्शनरीज, पॉकेट डिक्शनरीज, और हम उसे लाइब्रेरी से भी तलाश कर सकते हैं जो हमारे स्कूल में होती हैं. Yes. So for the 9th grader as an English language learner, we must have a dictionary with us. We can either have English to English dictionary, English to Urdu, and vice versa, so that we can learn more words in our language. We translate them and then try to learn that how do we use that word correctly. कौन से situations हैं जिसके अंदर हम उस लफ्ज को सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए. So you must own a dictionary. If you are owning a cell phone, you must have the dictionary application in your mobile phones and your other devices. It's very important as an English language learner that you always consult the dictionary for the right guidance. Alright, what is etymology? This is from the Greek origin word etymologia. What do we mean by etymologia or etymology? Analysis of a word. किसी भी लफ्ज को एनालाइज करना है to find its true origin, कि ये कहां से आया ये लफ्ज, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, ओरिजिन क्या है. Why do we learn etymologies? So that we learn the usage of the word in a better way, ताकि हम उस लफ्ज को और ज्यादा समझ सकें, गहराई में जाके, डेप्थ में जाके, ताकि हम उसका यूज और उसका जो यूजेज है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें. इसी तरह learning about etymology, dear learners, this is a very important skill and this is very important activity. इससे हमारी vocabulary increase होती है, इससे हमें बाकी अल्फाज के बारे में भी पता चलता है कि ये लफ्ज कहां से आया, और लफ्ज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हम उसको तोड़कर ब्रेक करके ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है. So the word we know etymon. Etymon means true sense और original meaning, कि इस लफ्ज को ओरिजिनली कैसे यूज किया जाता था और अब के दौर में, अब के कॉन्टेक्स्ट और ईरा में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि जैसे ही दौर चेंज होता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, तो अल्फाज जो है उसको एक नया नुआंस मिल जाता है, एक नई शक्ल, एक नया, उसके अंदर एक नया फ्लेवर ऐड हो जाता है, तो वो एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है. Logy means the study of. So etymology means the study of the true sense or original meaning of any word. So when you are learning vocabulary, dear learners, one important thing is that you do not just read the words and memorize the words by heart, but आपने उसको context में देखना है, use करके,
contextual learning or conceptual learning of the word is very much important. So one important thing is you must have a dictionary and you must learn the etymology of all the words that you are learning so that you can memorize them better and understand their usage better. All right. So I hope that we know what is etymology, the study of the original meaning or the true sense के लफ्ज का असल मतलब क्या था और किस तरह वो इवॉल्व हुआ, चेंज हो के अब क्या बन गया. तो उसकी एवोल्यूशन है, उसका एक अमल है इर्तिका का कि वो उससे गुजरता है और अब चेंज हो जाता है. अब 21st सेंचुरी में वो किस तरह इस्तेमाल होगा. Another thing is pronunciation. It means लफ्ज को अदा कैसा करना है, किस तरह अपने माउथ को यूज करना है, लिप्स, माउथ, टीथ, आपकी जो टंग है और ये पूरा इस जो आपका माउथ का स्ट्रक्चर है, इवन योर throat, your vocal cords, they help you pronounce a word correctly. So where do we learn? The best source of learning pronunciation is the dictionary and also the natives of that language. जो उस जबान के बाशिंदे हैं, जो natives हैं, वो उस लफ्ज को किस तरह बोलते हैं. ठीक है. The act of uttering with articulation is called pronunciation. The act of uttering with articulation के लफ्ज को बोलकर using your mouth is what we call pronunciation. The act of giving the proper sound and accent कि सही आवाज, अगर कॉन्सोनेंट की आवाज है तो कॉन्सोनेंट की आवाज आनी चाहिए, और अगर हम accent की बात करें, so what is the right way? The British pronunciation, the American pronunciation, etc. The pronunciation of syllables of words, distinct or indistinct pronunciation. We know that word is divided into different syllables, different parts. So how do we say each part correctly? All of these things are falling under pronunciation. So we must learn. अब यहाँ पे देखें, this is the pronunciation key of the word pronunciation. ठीक है. इसको यहाँ पे इस तरह लिखा गया है according to the International Phonetics Chart. तो हर लफ्ज के साथ आप एक की फाइंड आउट करेंगे in the dictionary and that tells you about the correct way of saying that word. Okay, this is from the book, as you can see, etymology of words in the dictionary. What is our entry word? The word that we are looking for. In this case, the word soldier is our entry word. So let's see how much information we can find about the word soldier. This is the pronunciation key over here. Soldier. The J letter, the J phonetics and everything is given over here. तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप उसको सही pronunciation कर सकेंगे. इसके बाद आप देखें यहाँ पे N, V, N. What are these alphabets? These are parts of speech labels. Okay. Soldier is a noun. Okay. Also a verb. So a person who serves in an army is called a soldier. This is the first definition. Second one is a private or a non-commissioned officer. And third one is a person who loyally serves in any cause. Soldiers of Christ. This is an example. Number 4 is a trusted follower of an organized crime leader. उसको भी soldier कहते हैं. In colonies of certain ants or termites. तो ants की अगर आप word में जाएं, उसमें भी हमने उनके कुछ individuals को और उनकी एक पूरी जो colony और पूरी hierarchy है उसमें भी you can find the word soldier. An individual having a large head and powerful jaws, adapted from defending the colony. So one word, but it has so many different meanings, and dictionary tells you about each and every one of these definitions. Next up, here is a special meaning: to act or serve as a soldier. Informal, to make a show of working, to shirk work. So इस context में भी use होता है. Then you have idioms कि जिन अल्फाज में soldier आता है, जो soldier लफ्ज जिन idioms में है. What are these idioms?
For example, soldier on. For example, soldier on. Soldier on means carry on in spite of great difficulty. जैसे हम उर्दू में कहते हैं कोई बात नहीं, शाबाश, हिम्मत करो, चलो, soldier on, let's go. It's okay if you are having difficulty or problem, soldier on. So this is an idiom. This is an idiomatic expression. Her deliberating illness made her job more and more difficult, but he soldiered on. But she soldiered on. कि उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उसकी बीमारी की वजह से काम मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और वो आगे बढ़ी. She soldiered on. So this is an usage of the idiom soldier on. And lastly, here we have etymology. So soldier word, let's see where does it come from. Soldier, S-O-U-D-I-E-R, shoulder, mercenary, and then it becomes soldier, and then soldier. So then ultimately it becomes the word soldier. So it has origin in Roman as well. Solidus means a Roman coin. All right. So all these words, let's see. Soldier, mercenary. This is the antonym. Okay. Sorry, not the antonym, but rather it is evolving. So it has all the information about a pronunciation that we need, and we can also see that there are so many words जो पहले किसी और तरह pronounce किए जाते थे और उसके बाद वो evolve हुए, and we learn about the etymology. Okay, so whenever you look up for the dictionary, whenever you look in a dictionary, you have to follow and you have to get as much information as you can. Here, as an activity, as a homework, find the etymology of the following words. What you're going to do is open up your dictionary, buy one if you don't have one right now. Risk, abuse, threat, addiction, significant and fear. आपने इनकी origin को देखना है कि ये लफ्ज कहां से आए. Secondly, write the antonyms and synonyms of the following words. यानी इन अल्फाज की तरह के और अल्फाज synonyms, and इस अल्फाज के opposite जो अल्फाज हैं antonyms, वो आपने डिक्शनरी से फाइंड आउट करके मार्क करने हैं. And then you have to make a list and all that in your notebook, and hence we can say that we have successfully achieved our students learning outcome about consulting dictionary, thesaurus or glossary in order to learn about the word's pronunciation and all the relevant information. So you can also get a thesaurus. Thesaurus में क्या होगा? All the synonyms and antonyms of every word is mentioned in your thesaurus. So for starters, though it's a little expensive, you can buy your dictionary. You can also get a thesaurus, and you can find glossary with every text of the lesson in your book as well, because those are the words that are difficult to understand. तो उसलिए ग्लॉसरी में उस लफ्ज को एक्सप्लेन किया जाता है, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो थोड़े से कल्चरल वर्ड्स हैं, ताकि हम उनको सही तरीके से समझ पाएं. You have a worksheet attached where you have to consult your dictionary and find these guide words, parts of speech, and all these different information. So this is all about today's lecture, dear learners. And one more thing is guide words वो अल्फाज हैं जो आपकी डिक्शनरी के टॉप लेफ्ट एंड राइट पर होते हैं. क्यों? ताकि सारे हजारों अल्फाज में से आप अपने सही वर्ड तक अल्फाबेटिकली जल्दी से पहुंच सकें. ठीक है, तो ये हमारा एसएलओ था, और इट ऑल नीड्स योर इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, कि आप डिक्शनरी बाय करें और उसको प्रैक्टिस करें. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गूगलिंग and using the internet, try to have a dictionary and consult the dictionary once and every other time whenever you need it. All right, so this is me, your instructor Zia Hamid, signing off. See you in the next video lesson. Allah Hafiz.